Hey guys, Rom Guruji here, back with another video, and this time it's episode number 2 of Tech News with Rom Guruji. So if you're new here, press that subscribe button and the bell icon for all the notifications. And अगर आपको ये वीडियो हिंदी में देखना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये वीडियो हिंदी में भी देख सकते हैं. So let's start the tech news with the biggest news for all the gamers out there, all the computer junkies out there. AMD released their 5000 series. And it's like thought out to kill Intel. Now, Intel is not dead. They still have a huge chunk of the CPU market share. But there's a change in trend. So if you know, AMD had come to a point where no one preferred AMD. If someone told me that, okay, this computer has AMD, I would just outrightly say, no, I don't want it. Their performance is not great. Their thermals are not great. So on and so forth. But recently, AMD has just received a shapelift, a facelift and whatnot, and they are blowing Intel out of the water. But still, Intel remained the biggest choice for gamers. Not anymore. So they recently launched the Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 chips, right? All of them have exceptionally better performance than all top level chips of Intel. But this time AMD has gone a different way. AMD has increased the performance but has not undercut Intel on the price. So price wise Intel is better, but performance wise AMD takes the lead. Now in certain games, in certain cases, Intel still has the lead, but AMD is covering up and Intel is losing their market share. So you really have to make sure you follow the news for getting which card is the best, because the competition is getting so hot. All of these guys are constantly churning out new and new chips, techs, graphic cards. So you know about the AMD Nvidia Showcase that's going on, where AMD just released their graphic cards and Nvidia is basically carpet bombing everyone there with their new graphic chips. Yeah, they recently launched the new lower end variants of their new 3000 series graphic cards. And it is crazy because yeah, these are powerful, but their power usage is so high. Why? And that is where AMD is winning. Even in the CPUs, even in the GPU, the power draw remains to be an edge that AMD has. So it's really interesting to see where this battle will go. But for all we know, the way mobile became competitive and the prices for mobile phones started going down and down, a similar thing may happen from graphic cards and CPUs, right? So stay tuned. Intel might bring cheaper CPUs, maybe. No, I don't think so. Not happening. Another tech news, Vivo has confirmed Origin OS and has started teasing the Origin OS on their own. In fact, they have created a new whole studio for designing Origin OS, which is a great leap for Vivo, someone who did not concentrate all that much on OS. Well, that's changing, guys, that's changing, and that might make Vivo one of the best phones available on the market. Stay tuned. And follow me, because if you're an IQOO user, you're totally going to get everything about the update. Talking about IQOO 3, the recent things that I found out in the beta do show there might be a new IQOO phone coming with higher refresh rate. Now obviously this is a long shot and take it with a pinch of salt. But when I was checking out the beta for Android 11 in IQOO, I saw the options for high refresh rates, and the IQOO 3 does not have high refresh rates. So yeah, a new IQOO mobile may be on the cards if the Indo-China issues may go down. Also, well, talking about some really interesting things, Redmi might continue to introduce phones on their Note 9 series. Why? Where is the new one? Well, no one knows. Well, but Digital Chat Station has come out with a leak where the Redmi Note 9 is shown to have really nice features and really great features. Obviously, you can see the screenshot above. And this might be an interesting take on how their lineup progresses and how it goes down. So it might be very interesting to see. Now,
recently the iPhone's iOS 14.2 update was released worldwide, and this update on a few phones was at least 5 GB. Wait, what is happening? iPhone has fixed a plethora of bugs, has added 100 emojis. Things are changing for Apple. In fact, they've improved their payment options, they've improved their speed, stability, their bug fix, and those emojis look so much better. They're I think more explanatory, which I think is very, very interesting. Talking about iPhones, iPhone 12 mini is finally set to arrive in the markets. Yes, finally the cheaper variant of iPhone 12 is coming, which is still going to be very costly. Yes, yes, we will buy an iPhone selling our kidneys. No, I'm sorry for the overacting. It's not that costly. It's very costly. Sorry. Talking about that, the sale of Amazon is ending, or rather never ending. I don't know what's happening. So yesterday was the last day for the sale, the finale day so called, and the offers are pretty bad. So very honestly, I've only seen a few great offers on Amazon, and that's on iPhone 11, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10, and Samsung Galaxy Fan Edition, which is already pretty cheap. So if you want to see that, yeah, links down below for best buy links. Right. What else has been happening? Well, the Trump and Biden election took an amazing turn on Twitter, which forced Twitter, Facebook to tell people that a certain tweet or a certain post might be fake or might be just to rile up feelings. Yes, Trump's tweet forced search giants to tell people, okay, certain tweets might be fake, certain tweets might be problematic. In a funnier way, right, Greta Thunberg replied to Donald Trump with his own words, and it was extensively funny. Screenshot on the screen right now. So if you are a Twitter user, go see these tweets. The retweets on these are also really funny, right? So that's all for the tech news this time. There's not a lot of happening, but come again on Saturday to experience better tech news and maybe more new phone releases. Oh wait, another thing that happened. Wait, what? Yes, Micromax released their phones, which look awfully similar to Huawei phones. You know what has happened to Huawei? The latest issues with Huawei? What is happening to Huawei? Well. It is not exactly like Huawei. The price points are pretty good and the internals are very nice. I know Micromax has faced a lot of criticism for being a company that rebrands Chinese phones, but this seems like a genuine effort to come back to the Indian market. We'll just have to wait for the proper launch of the products in the market to see whether it actually comes to fruition that, yeah, this is a great phone and Micromax is making a comeback. Microsoft can never make a comeback in mobile phones again. Why did they have to do the Lumia thing? But anyways, this was all for the tech news, guys. If you did like the tech news, please like, share and subscribe, and we're going to move to the Hindi version of it. तो guys, जो एक बात है, ठीक है, आज है टेक न्यूज़. पहली बार आ रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो. दूसरी बार आ रहे हो तो लाइक कर दो यार. पसंद नहीं आता कुछ नीचे कमेंट करके तो बोलो क्यों नहीं पसंद आता. ठीक है, तो टेक न्यूज़ शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर्स की. कंप्यूटर में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं. जिंदगी चेंज होने वाली है हमारी. तो मैं बताता हूँ क्यों. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स. कंप्यूटर की बात करते हुए मैं सडनली इंग्लिश बोल गया. ओह सॉरी, स्लिप ऑफ टंग. तो जो कंप्यूटर की बात अगर आप करोगे तो AMD ने उनके नए 5000 सीरीज प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं और वो अमेजिंग है. इसके वजह से इंटेल का मार्केट शेयर कम हुआ है. रिलीज होने से पहले इंटेल का मार्केट शेयर कम हो गया है. बाय द वे, रिलीज तो फोन अब तक हुए नहीं, मार्केट शेयर पहले ही कम हो गया है. तब भी इंटेल का मार्केट शेयर बहुत है, 60% से ज्यादा है. तो ऐसे कुछ ऐसे बहुत इफेक्ट नहीं हुआ है इंटेल को, बट इंटेल की थोड़ी वाट लगना शुरू हो गया. इससे और एक ट्रेंड आपको ये भी पता चलेगा, जो AMD है, ठीक है, उन्होंने इस बार अपनी प्राइसेस अंडर कटिंग नहीं रखी. उन्होंने अपना परफॉर्मेंस इंटेल की सारी चिप्स से बढ़ाया. तो Ryzen 5 हो गया, Ryzen 7 हो गया, Ryzen 9 हो गया, सब में परफॉर्मेंस इतना इंप्रूव्ड है कि वो इंटेल की सारी टॉप जो चिप्स है उन्हें बीट कर देता है या तो उनके इक्वल हो जाता है. पर अब पूछेंगे प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने $50 से अपने रेट बढ़ा दिए.
तो होता ही है कि पहले AMD होता था, चीपर वर्जन हो जाता था इंटेल की कंपैरिजन में, बट इस बार वो हो गया बेटर वर्जन, थोड़ा कॉस्टलियर। ठीक है, तो एक हमें इसमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि AMD को जैसे ही एक उनकी ग्रिप मिलने लगी है मार्केट पे, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। और AMD की बात करें तो Nvidia और AMD का जो झगड़ा चल रहा है वो भी जानना चाहिए। झगड़ा तो मतलब कुछ नहीं चल रहा, वो मतलब रिलीज किए जा रहे हैं एक साथ ना, फाइट करने की जगह। अरे Nvidia तो रुक ही नहीं रहा। Ryzen वालों ने अपना जो रेडियन ग्राफिक कार्ड है वो कर दिया रिलीज, AMD वालों ने। Nvidia शांत नहीं बैठा, Nvidia ने एक लॉन्च किया, दो लॉन्च किया, तीसरा लॉन्च कर दिया भाई। और ये सारे लॉन्च ऐसे कर रहा है टू मार्केट बॉम्ब। अभी ये जो मार्केट बॉम्ब का कंसेप्ट है वो एक सिंपल कंसेप्ट है। मार्केट बॉम्ब क्या होता है, आप अपने इतने प्रोडक्ट्स ले आओ मार्केट में कि इनवेरिएबली जितने भी मतलब इतने ही अगर आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में हर प्राइस रेंज में, तो कोई ना कोई बंदा तो खरीदेगा ही। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, टोटल मार्केट शेयर आपका बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, पर इससे आपको क्या फायदा होगा अगर मैं बताऊं तो, जैसे स्मार्टफोन में आपने देखा था इंडस्ट्री जब कॉम्पिटिटिव होती है तो प्राइजेस नीचे गिरने लगती हैं ताकि वो मोर कस्टमर अट्रैक्ट कर पाए। ग्राफिक कार्ड और CPU में ये जो कंपटीशन बढ़ रही है, इसमें हमें ये देखने को मिल सकता है कि प्राइजेस कम होने लग जाएं। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर उसके बारे में आपको आगे जाना है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ, ओरिजिन OS अब ये मेरा फेवरेट टॉपिक बन चुका है क्योंकि मैं IQOO 3 यूजर हूँ और हमें तो मतलब अपडेट ही इतने गंदे से मिलते हैं। ठीक है, ओरिजिन OS जो है उसका एक नया जो लीक आ रहे हैं वो अब वीवो ही डाल रहा है। अब किसी को लीक डालने की जरूरत नहीं, वीवो ही डाल रहा है लीक सारे। वीवो ने एक टीज करना शुरू कर दिया है ओरिजिन OS को। ठीक है, तो ये जो टीजर आ रहे हैं ये बहुत सारे आ रहे हैं और उन्होंने तो ये भी बोला कि उन्होंने एक नया स्टूडियो बनाया है ताकि इसकी डिजाइनिंग हो पाए। और मैंने जितना देखा मुझे बहुत पसंद आया है ये, और मेरे IQOO 3 में कब आएगा ये मैं सोच रहा हूँ। बट IQOO 3 की बात करते हुए मैंने एक चीज नोटिस की, अब ये थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें, मैं जो मेरा एनालिसिस है वो बता रहा हूँ, ये कोई एक्चुअल न्यूज आई नहीं है। ठीक है, जो मैंने Android 11 बीटा यूज किया था उसमें मेरे को रिफ्रेश रेट, जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट कंप्यूटर में होता है, उस टाइप का एक ऑप्शन दिखा था। और IQOO 3 तो रिफ्रेश रेट, हाई रिफ्रेश रेट वाला है नहीं, तो इसका मतलब IQOO का नया हाई रिफ्रेश रेट वाला वेरिएंट जरूर आ सकता है। स्टे ट्यून्ड रहिए, मतलब मुझे तो लगता है आएगा क्योंकि उन्होंने एक ही फोन लॉन्च किया मार्केट में, तो हो सकता है आए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेडमी की। तो रेडमी जो 9 सीरीज है ना उनकी, वो कंटिन्यू करना चाहता है, पता नहीं क्यों, मतलब शायद बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं नंबर 9 के साथ, कुछ ऐसा हो गया है। तो Redmi Note 9 का जो लीक है वो डिजिटल चैट स्टेशन से आया है। इसके स्पेक्स अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो हो सकता है Redmi Note 9 जल्दी ही आ जाए। इसके बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हम आते हैं यूएस इलेक्शंस पे। तो यूएस इलेक्शंस की बात करो तो ट्विटर और फेसबुक ने अगर कुछ पोस्ट थोड़े झूठ लग रहे हैं तो उनको मार्क करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प तो काफी मतलब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने तो मतलब ऐसे ट्वीट किए कि गलत लॉ चल रहा है, गलत वोटिंग चल रही है। तो ये सब देख के ट्विटर ने बोला कि हाँ भाई हम जरा चेक करेंगे कि भाई सच्चा पोस्ट है झूठा पोस्ट है, देखना तो पड़ेगा ना। हाँ, और ट्विटर की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं जो ग्रेटा थनबर्ग है, उनको कुछ साल पहले एक डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट में टैग करके ना उनकी ट्वीट पे कमेंट के साथ रीट्वीट किया था कि अपना एंगर जरा कंट्रोल कीजिए, एंगर मैनेजमेंट कीजिए, मूवी देखिए। तब जब डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा गुस्सा हो गए रिजल्ट देख के, तो ग्रेटा थनबर्ग ने भी उनको उसी तरह से ट्वीट किया। आपको ये ट्वीट स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, काफी फनी चीज है, जरूर देखिए। ठीक है, इसके साथ जो और एक चीज़ हुई है, माइक्रोमैक्स ने उनके सारा फ़ोन का स्पेक वेक सब लॉन्च कर दिया है। तो काफ़ी लोगों को लगा ये हुआवे के फ़ोन से काफ़ी रिलेटेबल दिखते हैं, बट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टेप है। उनको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, पर अगर इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री आगे बढ़े तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर इनका फ़ोन एक्चुअली वर्थ इट हो ना तो सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, ख़रीदना ज़रूर चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर वो फेक हुआ ना तो ये कंपनी वापस नहीं उठ पाएगी। तो ये देखा जाएगा उनके लॉन्च पे कि ये एक्चुअली उतना वर्थ इट फ़ोन है या बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ज़रूर देखेंगे। अगर आपको ये टेक न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब मदद होगी। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।